Hello students, I am Dr. Sunita Tandon from RR College Alwar. Today I am going to deliver the fourth lecture on environmental chemistry for M.SC final. It is a journal paper. In the last lecture or third lecture I have discussed atmospheric structure, and in that atmospheric structure I have explained to you the different four regions of the atmospheric structure. First is troposphere. It extends from 0 to 11 kilometers above the earth's surface in kilometers, and its temperature range is 15 to minus 56 degrees centigrade. Next region is stratosphere, which we'll study today, and it extends from 11 to 50 kilometers above the earth's surface, and temperature here increases from minus 56 to minus 2 degrees centigrades, and main constituent of this region is ozone. In the troposphere, I have explained you that as the height increases from 0 to 11 kilometers, temperature decreases from 15 to minus 56 kilometers, from minus 50 degrees centigrades, and this is known as lapse rate. Decrease or change in the temperature with altitude is known as lapse rate. In the troposphere, it is decreasing from 15 to minus 56. This is known as positive lapse rate. In stratosphere, temperature increases from minus 66 to minus 2 degrees centigrades, and ozone is main constituent. This is known as negative lapse rate. Today we will study about the stratosphere. The stratosphere lies above the troposphere. In fact, the region above stratopause or uppermost layer of the troposphere, that is tropopause, is called stratosphere. It extends up to 50 kilometers above the surface of the earth. In this region, the temperature altitude curve shows a warming trend with increasing altitude. That is, it exhibits a negative lapse rate. The temperature in this region continues to increase with height until 50 kilometers, where the temperature attained a maximum of minus 2 degrees centigrade from minimum of minus 56 degree centigrade. Because of very low temperature, there are virtually no clouds, dust or water vapors, and also no convection currents. The warming up tendencies of stratosphere is due to the absorption of solar ultraviolet radiations by ozone, whose concentration in this region is in range of 1 to 5 ppm or parts per million by volume, and this is responsible for the negative lapse rate. The presence of ozone in the stratosphere serves as a shield or umbrella to protect life on the earth from the harmful effect of solar ultraviolet radiation. Moreover, it serves as a source of heat for separating the quiescent stratosphere from the turbulent troposphere. Here, quiescent means nischal, shant, or silent, and turbulent means unruly, violent, disturbed, durdant, etc. It means the pressure and the presence of ozone it serves as shield for the light, protection of the light, and it serves as this ozone layer serves as a source of heat from separating. किन चीज़ों को सेपरेट करती है? ये जो क्यूसेंट और शांत स्ट्रेटोस्फीयर है उसको टर्बुलेंट, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ऐसे ट्रोपोस्फीयर से इसको सेपरेट करती है. Because of the quiescent nature of the stratosphere, the molecules and the particles in the region have long residence times. This is significant from the point of view of atmosphere pollution, because any pollutant reaching this region may spell long-term global hazards as compared to their impact in the troposphere, which is much denser than the more turbulent. इस पॉइंट का जो इम्पॉर्टेंट बात वो है कि अगर कोई भी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होता है, कोई भी पॉल्यूटेंट होता है जो इस रीजन में पहुंच जाता है, तो उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, जो ग्लोबल हैज़ार्ड है, वो ज़्यादा होता है ट्रोपोस्फियर इन द ट्रोपोस्फियर इन कंपैरिजन टू स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि वो टर्बुलेंट है. द रीजन इमीडिएटली अबव the stratosphere, that is above 50 kilometers,
is called stratopause, which is second transitional layer that is relatively warm, which is not much cooler than the earth's surface. It reflects sound waves from the earth back to the surface. ये आप साउंड वेव्स को वापस अर्थ की तरफ अर्थ से दूर भेज देती हैं. ट्रोपोस्फीयर से के ऊपर जो ट्रांजिशन लेयर है वो ट्रोपोपॉज कहलाती है. ट्रोपोस्फीयर के ऊपर 0 से 11 किलोमीटर एक्सटेंड करता है, पर 10 से 20 किलोमीटर तक जो है वो एक ट्रांजिशनल लेयर है जो कि ट्रोपोपॉज कहलाती है. इसी तरह से स्ट्रेटोस्फीयर जो है, स्ट्रेटोस्फीयर ये एक्सटेंड होती है 11 से 50, और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर कम होता है. और स्ट्रेटोस्फीयर से जब हम मीजोस्फीयर की तरफ जाते हैं तो ये इंटरमीडिएट लेयर कहलाती है ट्रोपोपॉज. The change in the temperature with height is called the lapse rate, as I have already told you. Stratosphere, ozone is formed. In fact, ozone forms a well-marked ozone layer called ozonosphere, which is stratosphere. Ozone is formed by the photochemical reaction between oxygen in this energy from the sun decomposed and oxygen molecules into atomic oxygen. Oxygen absorbs one quantum of light radiations and is converted into 2 oxygen atoms. This atomic oxygen combines with molecular oxygen to form ozone. As you can see, I have written in the PDF, ozone. The ozone content of atmosphere is sufficiently constant, that is, ozone in the equilibrium with rest of the air. It means ozone is being produced from oxygen as fast as it is broken down to molecular oxygen. This is important because ozone layer absorbs ultraviolet radiations from the sun. The reason that stratosphere becomes warmer with increasing distance from the earth is that ultraviolet radiations absorbed by ozone layer is transformed into heat. Ozone content is constant, so temperature remains stable in this layer. Now we will study the third layer of mesosphere. As you see in the table, mesosphere extends from 50 to 85 kilometers above the Earth's surface, and temperature here varies from -2 to 92 degree, and -2 to -92. It means -2 is less and minus is more, and -92 is low. So again the height and atmospheric temperature curve changes its direction, and again we see a positive lapse rate. This is the region above the stratopause and extends up to 80 km above the height. In this region, the temperature again decreases with height, that is, it exhibits a positive lapse rate. This is due to the relatively low levels of oxygen and other species that can absorb ultraviolet radiations from the sun. The temperature at the top of the mesosphere reaches above -92 degrees centigrade. Immediately above the mesosphere is another transitional layer called mesopause, which is the region of minimum or coldest temperature in the atmosphere, that is about -100 degrees centigrade. Next, and the fourth layer is thermosphere. This is the region immediately above the mesopause, where the temperature rises rapidly with increasing altitude, exhibiting a negative lapse rate. The maximum temperature that is attained in this region is about plus 1200 degree centigrade. This region is characterized by low pressure and low densities. The atmospheric gases present in this region are oxygen and nitrogen oxide, absorbs and solar radiations in the far ultraviolet region and undergo ionization. The far ultraviolet region has high energy and they have short wavelength. The region above the stratosphere
is the altitude range of 50 kilometers to 100 kilometers is called ionosphere. This I have not mentioned in the atmospheric structure, but this last layer is ionosphere. In this region, positive ions, for example, oxygen plus 2, oxygen plus 1, nitrogen NO plus 1, etc., and electron exist at significant levels. These charged species persist for long periods of time without mutual neutralization due to the rarefied conditions existing in the region. इसका मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर आयनोस्फीयर्स के अंदर आयंस उपस्थित रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लस 2, ऑक्सीजन प्लस 1, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं और सिग्निफिकेंट लेवल में प्रेजेंट रहते हैं. लेकिन ये चार स्पीसीज लंबे समय तक रह सकती हैं इसके अंदर बिना म्यूचुअल न्यूट्रलाइजेशन के. जब इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? ड्यू टू रेयरिफाइड कंडीशंस ऐसी रेयरिफाइड हैं कि डेंसिटी कम है, दूर दूर हैं पार्टिकल्स एग्जिस्टिंग इन दिस रीजन. द ट्रोपोस्फियर, द स्ट्रेटोस्फियर and the mesosphere are fairly uniform in composition. इन 3 layers का composition ये जो है fairly uniform होता है, ऑलमोस्ट पूरी हाइट में ऑलमोस्ट सेम रहता है, कहीं कहीं थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है. फ्रॉम द एयर पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ट्रोपोस्फियर इज़ पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंस. बाकी सब चीज़ों के लिए ये फेयरली कांस्टेंट रहता है, लेकिन पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रोपोस्फियर जो है वो पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट रहता है. तो 50 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर प्लस मीजोस्फियर प्लस थर्मोस्फियर, ये 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर एंड अप टू 100 किलोमीटर एक्सटेंड करते हैं. ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स. वी विल स्टडी द नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर सम टाइम. मम्मी और भी मंगाए, दोनों हो गए. आपके रूम का करना है, चालू था. सॉरी. नहीं, मेरे का तो देखो गंदा नहीं दिख रहा. ठीक है, बस मम्मी और भी मंगाए, दोनों हो गए. आपके रूम का करना है, चालू था. सॉरी. नहीं, मेरे का तो देखो गंदा नहीं दिख रहा. ठीक है, बस अंकिता, जो तेरी मेरी बात है बस वही रिकॉर्ड हुई है, बाकी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं. मम्मी और भी मंगाए, दोनों हो गए. आपके रूम का करना है, चालू था. सॉरी. नहीं, मेरे का तो देखो गंदा नहीं दिख रहा. ठीक है, बस इसके अलावा कोई और नहीं है. Hello, good morning students. I am Dr. Sunita Tandon from RR College Alwar, and today I am going to deliver the third lecture on environmental chemistry for M.SC final students. In the आने दो, फिर मैं रिकॉर्ड स्टार्ट कर देती हूँ. फिर कोई आएगा भी नहीं आपके रूम में, तब तक आप थोड़े रेस्ट. जो बेमन से काम तो करता जा, है अभी नहाइए, अभी झाड़ू पोछा को 15 मिनट लगेंगे. बेमन से काम किया है ना, 2 बार बोल चुकी हूँ, पूरा लेक्चर से रुक जाता है मेरा बोल बोल. इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? रिकॉर्ड भाई जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं सारे रिकॉर्ड हुआ है. तो बैठे पता नहीं रहते कैसे ना, तो बैठे बोल रहो. लो आप एक बार. तो फिर अभी जब तक सफाई होती है तुम नहा लो. क्या दिखाया मैंने वापस? अब ना उधर कर दो, तो कपड़ा भी ले लो. मम्मी और भी मंगाए,
चालू था